Yes, atoms. Keep reading. Atoms. Atoms में we are studying only two basic theories. We are studying. One is Rutherford and दूसरा क्या है? Bohr's model. And Bohr's model में atomic spectrum वगैरह we are learning. Okay. Atoms में first we are going for the which one? Alpha particle scattering experiment which is done by the Rutherford. And actually J.J. Thomson to study the structure of atom के बारे में we are learning. J.J. Thomson ने क्या बोला actually that the positive charges are continuously distributed, पूरा distribute हुआ and the electrons are embedded into it and he compared with the watermelon के साथ compare किया. Red part is nothing but positive charges and the seeds are nothing but the electrons बोल के he compared. To verify the Rutherford has done this experiment, alpha particle scattering experiment. So उसका क्या है देखेंगे, उसका कंक्लूजन्स क्या है, वी नो ऑलरेडी. ओके चलो. सो क्या है, ही टुक ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. डायग्राम शॉर्ट में ड्रॉ कर लो. सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल कौन है, बिस्मथ है. एंड बिस्मथ का एटॉमिक नंबर इज 83. Okay, this is a radioactive substance. It will generate an alpha particles. It will generate an alpha particle automatically. Okay, naturally. And इसका पास एनर्जी होगा, अल्फा पार्टिकल का एनर्जी है, इट इज 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. इतना एनर्जी से अल्फा इज कमिंग, ऐसा प्रोजेक्ट किया. ओके, बिस्मथ क्या है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, वो जनरेट करेगा, नेचुरली अकरिंग अल्फा पार्टिकल्स विल बी जनरेटिंग एंड उसका एनर्जी इज इस मच. And this is nothing but a lead box. It absorbs radiations. Absorbs radiations. तो अल्फा पार्टिकल सपोज इधर उधर गए तो इट अब्सॉर्ब करेगा ओनली अल्फा पार्टिकल. Now he put a thin gold foil between them. Gold foil लगाया, very thin gold foil. And thin means कितना thickness है मान में, thickness is 10 power of minus 6 meter to 10 power of minus 6 meter to 10 power of minus 8 meters. उतना छोटा थिकनेस है. 10 power of minus 8 is so small, 0.000 वाला. Okay, the thickness that much thin gold foil we are taking, and I am putting the alpha particles. Okay, now here I put a zinc sulfide screen, zinc sulfide fluorescent screen, zinc sulfide लगाया. Why? Because any charged particle will come and hit the thing, right? It will spark like fluorescent आएगा, like दिवाली में लगाते हैं ना, ऐसा sparks will be coming. Then only we can know, oh हाँ alpha particle इधर आकर गिरा, इधर आकर गिरा, इधर आकर गिरा, उनके we can understand. Okay, now इसमें क्या होगा विल सी, उसमें क्या क्या होगा विल सी. तो डायग्राम ड्रॉ कर लो. एंड अल्फा पार्टिकल के बारे में मालूम है ना, अल्फा पार्टिकल इज अ डबली चार्ज हीलियम आयन. इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, हीलियम में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, He2 प्लस में, He2 प्लस में there is no electrons. Okay, only 2 protons and 2 neutrons will be there in the nucleus. Plus 2 means 2 electrons gaya. That means nothing but simply alpha particle is nothing but helium nucleus. Helium nucleus is nothing but the alpha particle. Okay. Now इसमें क्या क्या हुआ है, observations क्या है, most of the alpha particles are passing through the gold foil. ऐसा पास हो जा रहा है, most of the alpha particles is passing and only few, very few are getting deflected certain angle theta, and this theta is called scattering angle. This is called as scattering angle. Scattering angle. Okay, and 1 out of 10 power of 6 atoms में it is getting rebound हो रहा है, 180 degrees में हो रहा है. उसका conclusions क्या है, we'll see. That's it, simple.
डन ना? ओके, अब इसका कंक्लूजन देखेंगे क्या है। गोल्ड फॉइल से पास किधर से कुछ नहीं। देखो इधर, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज पासिंग एंड सम आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड एंड 1/10⁻⁶ में इट रीबाउंड हो जाएगा। ओके, ऑब्जर्वेशन लिखो। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल विदाउट सफरिंग एनी कोलिजन, मतलब थीटा इज 0 डिग्रीज, थीटा है ना, स्कैटरिंग एंगल इज 0 डिग्रीज, स्ट्रेट में जा रहे हैं। And around 0.14% of the incident alpha particles scattered more than 1 degree, 1 डिग्री से ज्यादा है, ये पूरा एनसीईआरटी में दिया है। 0.14% of the incident alpha particles scattered more than 1 degrees, and around 1 out of 8,000 alpha particles deflected more than 90 degrees, and approximately 1 in 10 power of 6 alpha particles deviated by 180 degrees and returned back. 10 power of 6 में only one coming 180 degrees में. These are the observations which is done by the Rutherford, and from that they will conclude all the things. क्यों जा रहे हैं अंदर पूरा अल्फा पार्टिकल्स, मतलब इनडायरेक्टली ही थॉट एक्चुअली पूरा अल्फा इज नो पॉजिटिव चार्ज। जे थॉमसन बोला पूरा पॉजिटिव चार्जेस है, so positive positive will repel and so much deflections you have to observe, but that is not happening. That means all alpha particles are passing, that means indirectly atom is empty, पूरा atom is empty बोल के they concluded. लिखो। Then okay, चलो। Now he drew the graph also. कैसा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर्सेस एंगल आल्सो, मतलब लोअर एंगल में हाई रिफ्लेक्शन ऐसा। ही ड्रू द ग्राफ, सो ही ग्रॉट द ग्राफ लाइक दिस, स्कैटरिंग एंगल वर्सेस द नंबर ऑफ स्कैटर अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्टेड। देखो एट 0 डिग्रीज में ऑलमोस्ट वेरी लेस परसेंटेज में, देखो सो मेनी पार्टिकल्स आर कमिंग गेटिंग डिफ्लेक्टेड, and as the angle is increasing, the alpha particle scattering is decreasing, exponentially decreasing graph आया। And lower angle up to 170 degrees में देखो only some few of the alpha particles got deflected, and 180 में approximately 1 or उतना छोटा में आएगा। Okay, exponentially decreasing graph आया। And he also given the formula to calculate the number of alpha particles scattered, मतलब इस एंगल में कितना स्कैटर होगा, कितना पार्टिकल स्कैटरिंग है, उसका रिलेशनशिप फाइंड करके ही फाउंड द फार्मूला। ओके, फर्स्ट फार्मूला ऑफ द एटम्स विल गेट फ्रॉम दैट। So normally you can draw like this: number of alpha particles versus scattering angle, exponentially decreasing that, exponentially decreasing that. Okay, then okay. Now we will see the number of alpha particles scattered at angle theta. Number of alpha particles scattered at an angle theta. So he told the number is proportional to sine power 4 theta by 2, and that number is also proportional to the atomic number. Atomic number पर depend होगा। Gold foil है तो scattering is different, aluminum foil है तो scattering is different, because उसका arrangements are different, right? That's why he concluded that different elements will have different nucleus, different size of the nucleus. Based on that only scattering will take place, right? So he, when I remove proportionality, we'll get a constant, n is equal to k z square.
Okay, you can write it is depending on h square by sine power of 4 theta by 2. Sine power of 4 theta by 2 is a formula. Kz square by sine power of 4 theta by 2, where k is constant for given material. एक material का एक constant will be given to you. Question. अगर same material है तो k will be same. Z also will be same material में. They will tell sort of same material. What is the number of, अगर इतना particles इतना angle में इतना particles है तो उतना angle में कितना है पूछेगा. So we can use this relationship in this inverse proportional to sine power of 4 theta by 2. use करके solve कर सकते हैं. So first formula you have to by heart, kz square by sine power of 4 theta by 2. Kz square by sine power of 4 theta by 2. Then formula क्या ना, kz square by sine power of 4 theta by 2 is the formula. चलो questions करो. And theta is scattering angle. Scattering angle मालूम है ना, वो angle horizontal से कितना angle है, that is good. Okay. 1000 alpha particles are deflected 60 degrees. Find alpha particles that deflected 90 degrees for the same foil. Z is same, k is same. He is asking a number of alpha particles. N value asking at 90 degrees. $62.5. I'll give options 100, 150, 200, 250. नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मतलब k सेम z सेम दोनों को डिवाइड कर लो, आ जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन का डिवाइड कर लो, विल गेट द वैल्यू. हाँ 250. यस. तो 65.9 है तो 250 आएगा. ओके What is 90/2? ओके गॉट अ श्याम. n is equal to kz square by sin power 4 theta by 2. पहले थीटा क्या मतलब देखो, k is same z is same, right? That means n is inverse proportional to sin power of 4 theta by 2. now use करो. n dash by n is equal to sin power 4. This is n dash, correct? So first angle you have to use inverse relation, no? So 60 by 2 is 30 by sin power 4. 90 by 2 is 45. So sin power 430 means what is meaning? Sin 30 का whole power 4. So 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2, 4 times multiply करने का. Here sin 45 is 1 by root 2, 1 by root 2 multiply करने का. N value they given as 1000. So n dash is 250. So kz square by sin power 4 theta by 2 is the value we'll get. Chalo. Now from this, Rutherford has given the nuclear model of atom. After doing the experiment, he conclusions पूरा है ना. Because since most of the alpha particle passes undeviated, most part of the atom is empty space. पूरा inside empty space है, खाली है. नहीं कितना छोटा है मालूम है atom में they will compare, you know, generally atom 10 power of minus 15 है तो 10 power of minus 10 है तो and nucleus size is 10 power of minus 15 होगा. उतना छोटा है, like almost 1 lakh times smaller than the atom. उतना, like you know, needle head, and you can remember like room, one room and needle head का कितना size है, that much nucleus will be there inside.
That's why the most of the alpha particles got undeviated. Okay, and since alpha particles deflect more than 1 degree, this means that there is a positive charge inside the atom. First deflection over why there is a positive charge. Why? Because alpha is a positive, nucleus is a positive, positive बच्चे will repel, right? So थोड़ा deviations are. As alpha is also positive and this positive charge is concentrated in the extremely small space inside the atom called nucleus. He only given the name nucleus. Calculation show that size of the nucleus is देखो 10 power minus 15, whereas size of the atom is 10 power minus 10. उतना छोटा, 1 lakh times smaller. That's why deviations are very less, 1% are there. And why electrons are not coming closer to the nucleus? He only told electrons are revolving in circular paths. Okay, he told circular path, but problem kya hai? Small mistake. He told that it is moving in any circular paths. That is the problem. That is उसके वजह से only that इसका theory failed. Some so many limitations came into picture. Any circular paths नहीं, only specific orbits में घूमेगा बोल के Bohr's बोला. But he told any circular path. Okay, उसके वजह से only he could not able to explain the atomic spectrum for this one small sentence. Okay, उसके वजह से. Okay, why electrons are not coming closer to the nucleus? Because nucleus is positive charge, right? Electrons are negative charge. Then क्या होगा? Positive और negative attract हो जाएगा. Why it is not coming? Explain करो. हाँ सर ठीक है. You can compare with the planetary model. Why the moon is not coming to the earth? Because all masses can attract to each other, right? हाँ. Explain clearly क्यों आ रहा नहीं आ रहा है? बोलो. अरे फ्यूचर आईआईटीएंस बोलते हैं, नीट बिटसेट बोलते हैं, ये बोलते हैं. बोलो. So So velocity. हाँ. Velocity, because it spins at such a fast speed, it doesn't go inside the atom. It's a nucleus. अरे ऐसा थोड़ी ना है, घूमे तो नहीं गिरेगा. मतलब टेक्निकली शुड से. ओके विल सी. इसका 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 देखेंगे, समझ में आएगा. देखो थर्ड वही है. फॉर फॉइल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये भी देखो इट इज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर भी बोल के बोला. देखो फॉर फॉइल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल थीटा डिफरेंट. मतलब एल्यूमिनियम यूज किया तो डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल आ रहे हैं, एंड फॉर गोल्ड फॉइल यूज करते डिफरेंट स्कैटरिंग आ रहे हैं. दैट मींस दिस सजेस्ट दैट डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस. different elements have different positive charges. That's why it depends on atomic number बोल के बोला. It depends on atomic number. Different elements have different atomic number. So you should explain that actually there is a gravitational force acting every point of time. Gravitational force is acting like a centripetal force.
दैट सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ओनली द that is not coming closer to the nucleus. They will compare, right? A thread and stone, they will tie. मैं घुमाता जाऊंगा, there is some force acting towards center, tension force acting towards center. The tension force is acting like a centripetal force. Okay, centripetal force के वजह से what will happen? When there is a force, there is acceleration. When there is acceleration, there is a change in velocity. साथ understand. ये थोड़ा आपको कोई पूछेगा तो भी should able to explain basically क्या होगा बोल के. Okay, tell me साथ तक क्या समझ में आया? आपको which force is acting towards center, moon and the earth का? Centripetal. Which force is acting like centripetal force? Gravitational force is acting like a centripetal force. So this is the earth, this is the moon. Okay, मैं moon घूमता जा रहा है, earth revolves and घूम रहा है. Okay, इसके साथ रोटेट कर रहा है. Now देखो, there is a force acting every point of time है. This is called centripetal force. And which force is acting like centripetal force? Gravitational force is acting like centripetal force. Capital G M1 M2 by R square वाला. Okay. Now देखो, there is a force means there is a acceleration. If there is a gravitational force, that means there is acceleration should be there. Acceleration means velocity should change. Velocity should change. Velocity is a vector quantity, right? Either magnitude change हुआ तो velocity change होगा, और direction change हुआ तो velocity change होगा, right? Right? Now देखो, this here what is changing? What is changing? Magnitude changing or velocity changing? So direction is changing. Direction is changing. ऊपर, left, right, down, right जा रहा है ना. So direction change. Direction change हुआ तो velocity change होगा. Velocity change हुआ तो acceleration आएगा. Acceleration की वजह से force आएगा. So this force is responsible to change the velocity direction. Okay. And मतलब ये force नहीं है तो ये direction change नहीं होगा. So it will not stay in circular path. It will not stay in circular path. आपको स्टोन एंड थ्रेड से वही बोला ना, मैं घुमाता जा रहा हूँ, द टेंशन फोर्स नहीं, अब तक तब तक टेंशन फोर्स रहेगा, दैट विल रोटेट. इफ आई लीव, व्हाट विल हैपन? इफ देयर इज नो टेंशन फोर्स, खलास, इट विल फ्लाई अवे. सिमिलरली एक मिनट भी, एक मिनट नहीं, 5 सेकंड्स आल्सो, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स बंद हो गया, खत्म, इट विल फ्लाई अवे. हम लोग वी आर आल्सो स्टेइंग ऑन द अर्थ, राइट? वी आर आल्सो स्टेइंग ऑन द अर्थ. ऐसा है ना. अगर 2 मिनट, अगर एक मिनट भी ग्रेविटेशनल फोर्स निकल गया, क्या होगा? हाय बाय बाय, सब लोग सब उड़ जाएगा, जुम बोल के, सब लोग एक प्लैनेट में जाएगा. ओके, चलो. The electrons are attracted by the nucleus due to electrostatic force. Here, which force is acting? Electrostatic force is acting, but is not pulled towards as they are consistently revolving in circular path. जब तक circular path में घूमता जाएगा, it will not pull towards itself. Okay, using this electrostatic force as centripetal force. Like we compared with the planetary model, right? Here also same thing. Now we are using this equation, one formula आएगा, वो equation Bohr's model में use होगा. Okay, so क्या बोला? देखो, electrons are revolving in circular path बोला, circular path बोलेगा, it any circular path बोला. Okay, here what is which force is acting towards center? Centripetal force, and that is acting like a electrostatic force. Electrostatic force is acting like a centripetal force. Okay, इसका मास है m. Now here इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मान लो E. E is the charge of electron. Okay, इसका प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा? टेल में, प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा? इज मूविंग विद वेलोसिटी v, घूमता जा रहा है. देखो, एक प्रोटॉन का चार्ज, सी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट, सेम ओनली, चार्ज इज सेम, 1.6 10 power minus 19. Okay, z protons are there. So what will be the total charge of the nucleus? If one proton का charge is E, z protons are there, उसका charge will be Ze, right? Ze. Now apply the concept. Electrostatic centripetal force is acting like a electrostatic force, right? Centripetal force is mv square by r. Okay, is equal to electrostatic force between them. याद है, k q1 q2 by r square. K is 1 by 4 pi epsilon naught. q1 q2. q1 is E, q2 is Ze by r square. Okay, so ये इक्वेशन आपको फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, ये बोर्स में यूज होगा टू फाइंड द रेडियस, वेलोसिटी, ये दोनों इक्वेशन यूज होने वाला है, एक इक्वेशन.
सो एक ही एक गलत किया कि एवरी पार्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन एनी सर्कुलर पाथ बोल के बोला, बट बोर ने क्या बोला, इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, उसमें उसका रेडियस वेलोसिटी पूरा दिया. So these all things, he concluded, Rutherford concluded, and he has given the formula also like this. That's why electron is not leaving the atom; it is revolving continuously because of this electrostatic force acting. It is acting like centripetal force. अगर electrostatic force बंद हो गया 1 second के लिए, electron will fly away from the nucleus. Okay. So ये फील ज्यादा नहीं होगा, मतलब फिजिकली दिखाई नहीं दे रहा ना, कैसा पुल कर रहा है, क्या पुल, कौन बोल रहा है, ऐसा थोड़ा ऐसा लगा, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट. एनीवेयर इफ यू सर्च सेम थिंग विल बी देयर. ओके, चलो. नो, नो, दूसरा कंक्लूजन शब्द देखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. लिखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रिप्रेजेंट एज आर नॉट. आर नॉट से रिप्रेजेंट करेगा the minimum distance between the center of the nucleus and alpha particle when the alpha particle just stops momentarily before being repelled back due to electrostatic force. Okay, so what is dekho, is a nucleus, is electrons revolving around the nucleus. मान लो इधर alpha particle is coming with some kinetic energy. kinetic energy से आ रहा है, initial kinetic energy से जा रहा है. ये nucleus is also positive charge, right? This is a nucleus. This is also positive charge. What will happen when the alpha particle is coming closer to the nucleus? What will happen? The kinetic energy will decrease or increase? A भी positive है, A भी positive है. It goes on decreasing. Ripple होगा ना? So आएगा 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 आएगा, slow होगा slow होगा slow होगा. एक particular time में alpha particle तक आने के बाद उसका kinetic energy is becoming 0. And that distance where exactly momentary 0 के पीछे आएगा, right? So that the distance को we call as R naught, distance of closest approach. इतना तक आएगा बोल के, is R naught. कोलिजन बोल के 180 डिग्री जाएगा बोल के हिट करके नहीं जाएगा, वो जाके जाएगा ऐसा 0 करके पीछे आ जाएगा 180 में. Okay, so this is called distance of closest approach. And initial kinetic energy is totally converted to the potential energy. We use that concept. And initial kinetic energy is equal to potential energy. Potential energy formula क्या है? K Q1 Q2 by R, right? So K is 1 by 4 pi epsilon. Q1, Q alpha is doubly charged helium atom, right? 2e, doubly charged helium atom. Q1 Q2, Q2 is ZE by R naught square. This is the potential energy. Formula याद है? Kinetic energy is converted to potential energy K Q1 Q2 by R naught is the formula. And from this we'll get a formula. R naught is equal to, if you cross multiply, R naught equal to 2Z E square by 4 pi epsilon naught times of kinetic energy. This is the formula. Where do we add? 2Z E square by 4 pi epsilon naught kinetic energy. A distance of approach, closest approach, will give the idea for size of the nucleus. Dekho, you tell me R naught is from here to here, right? Whether nucleus size is lesser than R naught or greater than R naught? Nucleus size is lesser than R naught, greater than R naught? Lesser than R naught, right? So this that means distance of closest approach तक आपको identify हुआ तो उससे भी less है बोल के you will get idea. Okay? So कब short form लिखो. At the point of closest approach, kinetic energy is equal to the electrostatic potential energy at R naught. Total energy, either kinetic energy only, is converted to potential energy and stopped. Kinetic energy 0 there. Okay, if you substitute for this metal ka, almost R naught value you get as 30 Fermi. उतना distance of closest approach. उससे भी small है nucleus का size approximate. Okay, चलो देखो फॉर्मूला आ गया ना, distance of closest approach 2Z square by 4 pi epsilon naught kinetic energy. R naught is the distance of closest approach, atomic number
charge of electron and kinetic energy of the alpha particle. And देखो R naught gives the estimate of the nucleus size. Nucleus size का बारे में we can know by using this R naught का case में. So these are terminologies which are he talked about, Rutherford talked. Okay. One more terminology also is there. ये formulas बैठ करने का तो easy हो जाएगा. चलो हो गया. No, next. Impact parameter. Next one is impact parameter. We represent as B, small b. Impact parameter. देखो, the impact parameter B is a perpendicular distance. एक perpendicular distance रहेगा between the किसका बीच में, initial direction of the incident alpha particle का incident direction का, initial direction का, and the center of the nucleus. इन दोनों का बीच का perpendicular distance is called impact parameter. देखो, this is the nucleus. This is center of the nucleus का line. So here alpha particle, मान लो alpha particle is coming like this. ये जाएगा 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 जाएगा. ये nucleus positive charge ripple and ऐसे जाएगा. Right? So what is the impact parameter means? The perpendicular distance from the initial direction of incident ray. Initial direction is this one. उधर से center of the nucleus का distance को, perpendicular distance को we called as impact parameter. Initial direction of the alpha particle and the line joining the center of the nucleus का perpendicular distance is nothing but the impact parameter. Okay. And this distance को क्या बोलते हैं? ये distance क्या है? नजदीक तक आकर चला गया. इसको distance of closed approach बोल सकते हैं or not? But this is not impact parameter. This is impact parameter. Initial and the line joining the center वाला का distance को we call as impact parameter. Impact parameter will use the idea. देखो, अगर मान लो B tends to 0, मतलब alpha particle exactly in the same direction of the nucleus is there. Can you tell me the scattering angle कितना होगा? Scattering angle कितना होगा? मतलब initial and final का angle कितना होगा? Tell me. When the alpha particle is B tends to 0 means when the alpha particle is exactly here. ये जाएगा जाएगा जाएगा, initial direction ऐसा है, जाके रुक जाएगा and come back, right? Final direction is backwards. So angle between initial and final is how much? Initial and final का angle is 180 degrees. So theta is 180 degrees. Pi. Okay, pi radians. Okay, और radians पे लिख लो, हो जाएगा. Pi radians. Okay, when B tends to infinity, now tell me, बहुत दूर है alpha particle. सीधा जाएगा, there is no effect of the nucleus, straight जाएगा. Initial भी वही direction में, final भी वही direction में, angle is 0 degrees. So theta is 0 degrees. 0 degrees. Okay, so you understand that impact parameter gives the idea of the scattering angle. Scattering angle में जाएगा. Okay, चलो. Now इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है इम्पैक्ट पैरामीटर का. लिखो B is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Z E square cot theta by 2 by kinetic energy. This is the formula. Impact parameter. B is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Z square cot theta by 2 by kinetic energy. Here Z is atomic number, E is a charge of electron, theta is a scattering angle, and kinetic energy, K is a kinetic energy. Okay. And electron volts ka, you know how to convert, right? Energy sometimes electron volts में joules में convert करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 joules. Okay. चलो. So these are the things Rutherford बोला. Rutherford ने क्या क्या बोला है, प्रॉब्लम क्या है उसका एक्सप्लेन किया है, स्ट्रक्चर ऑफ द, ही ओनली टोल्ड अबाउट न्यूक्लियस के बारे में, एवरीथिंग इज गुड ओनली.
but he told electrons revolve in any of the circular paths, इधर घूमेगा, उसके वजह से only the problem came. And दूसरा, he also explained about the distance of closest approach, and दूसरा impact parameter के बारे में also he learned. Okay, now इसका limitations देखेंगे. Limitations of Rutherford. So two limitations are there. याद है limitation? First limitation क्या है? He did not stability, atomic stability के बारे में failure to explain. Oh, according to the classical electromagnetic theory, any charged particle in circular motion like electron around the nucleus continuously radiates its energy. Classical theory के हिसाब से any charged particle, if it is moving, it continuously radiates its energy and finally fall into the nucleus. ऐसे गिर जाने का compulsory. But that is not happening. Electron is a charged particle. If it is moving, मतलब क्वेश्चंस पूछेगा ना, अदर पर्सन विल आस्क क्वेश्चंस, राइट? सो वो लोग बोला कि चार्ज पार्टिकल अगर मूव हो तो डेफिनेटली इट लूजेस इट्स एनर्जी, अकॉर्डिंग टू दैट इज थियरी, राइट? बट इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल, यू आर टेलिंग दैट इट इज मूविंग सर्कुलर ऑर्बिट. कैसा मूव होगा? हाउ कैन इफ इट मूव्स, इट शुड रेडिएट इट्स एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. देन क्या होगा? व्हाई नॉट हैपनिंग बोल के डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछने वाला रहेगा ना, तो कुछ ही कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन. दैट्स व्हाई वो लोग न्यूज़ पीपल विल रोट द लिमिटेशंस बोल के वो छप गया कि दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन बोल के. अगर इट लूजेस एनर्जी, इट वुड हैव कोलैप्स विद इन 10⁻⁸ सेकंड्स में नीचे गिर जाने का. बट इट इज नॉट हैपनिंग, ऑल एटम्स आर स्टेबल ओनली. ओके, दैट्स व्हाई ही कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन. फर्स्ट लिमिटेशन लिख लो. सो समझ में आया ना इलेक्ट्रॉन्स क्यों अंदर नहीं गिर रहे बोल के नॉर्मली. Then okay. Next one is second one is he could not able to explain the discrete atomic spectrum. Discrete atomic spectrum means only a certain colors only should is falling coming in the spectrum में. Okay, but according to Rutherford, पूरा continuous spectrum should come. Okay, is coming. The experiment normally he thought that it will come the continuous spectrum, but actually if they done the experiment, we are getting the emission spectrum. Atomic spectrum we will study detailedly in the last में. So क्या है देखो, experimentally each element gives a line spectrum. Each element का line spectrum ही आ रहा है. Different elements का they done experiment. He got the line spectrum only.
But according to Rutherford, electron can have any energy while orbiting, so it emits continuous radiation, not discrete lines. But he could, that's why he could not able to explain line spectrum of hydrogen or other atoms. He could not able to explain. Okay. So, matlab, why you will understand Bohr's आने के बाद you will understand why it is discrete. He explained. Bohr's explained why the line spectrum is coming. Okay. देखो. So इसमें definitions इसमें R naught का n value 3 formulas we learned. All 3 formulas by heart करना पड़ेगा. Dual lecture का SN right formula sheet everything. Copy it? Yes. Now we'll go for the Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. See, this Bohr's atomic model is valid for hydrogen or hydrogen likes atoms only. Atoms only. Matlab, what is the meaning of this one? Hydrogen like atoms only means single electron elements. single electron elements का. Suppose मान लो He plus is there. Helium का atomic number is actually 2 electrons रहेगा, but one He plus means 1 electron jump कर दिया. That means this is Bohr's model is valid. He can able to explain this one, single electron species. Or I can write lithium 2 plus. That means lithium का atomic number is 3 electrons होने का, but 2 plus है तो 2 electrons jump कर दिया. Only 1 electron is there. So then also we can able to explain the hydrogen or hydrogen like species only. Like this only Bohr has explained in for at the single electron species only. These all are single electron species. Single electron species. Okay. Now iska postulates are there. Totally iska 4 postulates are there. 4 postulates are there. Okay. Okay. Chalo. Bohr first postulate. Electrons in an atom could revolve in certain stable orbits without emission of radiant energy. वो क्या बोला Rutherford he could not able to explain, right? Any charge particle should radiate energy and finally fall into the nucleus बोले तो he done some experiment. He told that ये electron घूमेगा in orbits में उस time में it will not radiate any energy and finally fall into the nucleus. वो confirm कर दिया. वो experiment करके he proved that it will not come to the nucleus. That's it. Okay, classical mechanics theory इधर नहीं लेके आने के लिए बोल दिया वो. Okay, so it will without emission of radiant energy. These orbits are called energy levels or stationary orbits, and these were called as KLMN energy levels. Okay, so now here nucleus is there.
देखो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट्स इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, राइट? ऑर्बिट्स में घूमेगा, विच वी स्टडिंग फ्रॉम सेल डाउनवर्ड्स, के एल एम एन, राइट? लिखो इधर तक लिखो। एंड एक एक एनर्जी रहेगा। इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा फर्स्ट शेल में, उसके पास एक एनर्जी होगा, दैट इज हाउ मच एनर्जी, वो ऐड करना पड़ेगा आपको, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नेक्स्ट वन इज सेकंड शेल का एनर्जी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा उसका एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सेकंड शेल में घूमेगा, उसका ऑर्बिट का एनर्जी, उसका इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इतना एनर्जी से घूम रहा है। ओके, सो उसको शेल का नाम भी दिया, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। फर्स्ट postulates of the Bohr's फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स रहेगा, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। ओके, एंड ये बाहर करने का, एंड एनर्जी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। एनर्जी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इट इज 13 पॉइंट्स, -13.6 से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है? अरे बोलो, इंक्रीज ऊपर और नीचे। ओके, बोलो। इट इज Increasing because it's increasing. negative. Yes, negative ना, energy is increasing. Okay, चलो, these are things, this is first shell में। ये बैड करो, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, ये 4 shells तक आपको बैड कर दिया तो sometimes they will ask energy level is 1.51, which shell the electron is revolving, directly you should say third shell। फिर से कैलकुलेट करके तो n फाइंड करने से अच्छा थोड़ा 4 लेवल्स तो मिनिमम बैड करना पड़ेगा। ओके, बैड करो, एंड देखो एनर्जी, एंड इधर से इधर एनर्जी खाली है, दिस गैप, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, दैट्स द थिंग। वो दैट्स के उसके वजह से ओनली द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम इज कमिंग। वो क्या बोला, किधर भी हो, किधर भी हो, उसके पास एनर्जी होगा, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होगा बोल के बोला रुदरफोर्ड, बट स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में है एनर्जी है। ओके, कब बेटा? यस, नो, सेकंड वन, द एनर्जी स्टेट्स आर डिफरेंट। वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में क्यों घूम रहे, ही एक्सप्लेन, only that -13.6 electron volts energy है ना, why only that orbit you are using, why not other orbits, बीच का गैप किधर है, कैसा है, बोल दो, कुछ कैलकुलेशन करने का, राइट? he told that देखो इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus only in those orbits for which orbital angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। ये केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना। so it will rotate in those orbits whose angular momentum is integral multiple of h by 2 pi, मतलब L is equal to NH by 2 pi, where n equal to 1, 2, 3, so on। So first orbit का angular momentum h by 2 pi satisfy हुआ, then that's why we choose that orbit, first orbit। And second orbit का angular momentum of the electron he calculated, and that orbit का energy level, corresponding energy level only he took the second orbit। Okay, NH by 2 pi। And here you have to understand n equal to 1 is called as, नाम क्या है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ओके, ग्राउंड स्टेट में एल वैल्यू कितना है, एल इज इक्वल टू एन इक्वल 1 लगाए तो h by 2 pi, एंड n इक्वल 2 लगाया, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, FIRST, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड, एक नंबर आगे लिखने का, फर्स्ट एक्साइटेड मींस n इक्वल 2। ओके, सो n इक्वल 2 लगाए तो L इज इक्वल टू 2h by 2 pi। सिमिलरली n इक्वल 3 को क्या बोलते हैं? सेकंड एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड मींस n इक्वल 3, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, L इक्वल टू 3h by 2 pi। ऐसा एग्जैक्ट एंगुलर मोमेंटम जो सेटिस्फाई हो, इसलिए वो चूज कर दिया कि दैट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट चूज किया है, सेकंड ऑर्बिट चूज किया है। ऐसा, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन
सर्कुलर मोशन का एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट ईयर में वी स्टडीड L is equal to mvr is a formula for angular momentum for a circular motion. Since electron is revolving in a circular orbit, उसका angular momentum is mvr, right? So now we can equate this one. mvr is equal to mvr because इसमें सब करूंगा L के जगह में mvr is equal to nh by 2 pi. This is the second equation. फर्स्ट इक्वेशन का है रूदरफोर्ड का फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन इज हियर. ये दो इक्वेशन यूज करके ओनली रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एवरीथिंग वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशंस ओनली. दैट्स व्हाई टू इक्वेशंस वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग लाइक ए सेंटीमीटर फोर्स. उससे इक्वेशन आया, रुदरफोर्ड ने बोला. एंड द बोर्स मॉडल का एंगुलर मोमेंटम का कंडीशन दोनों यूज करके दे फाइंड एग्जैक्टली द रेडियस वगैरह. ना इधर से रेडियस भी आ जाएगा, रेडियस का भी आ जाएगा. Radius of end shell. So what is we have to find radius of end shell. So what is the first condition? क्या था? First angular momentum से बोर से mvr is equal to nh by 2 pi. This is the first equation from Bohr's. The second equation from Rutherford से mv square by r is equal to 1 by 4 pi epsilon naught z e square by r square. Second equation. mvr equal to nh by 2 pi and mv square by r. This is from Rutherford. This is from Bohr's model. Now आप करो कि 1 square. First equation को square करो and divide by second equation करो and find r. Will get value. First equation का दोनों तरफ square divide by second equation. So square करो first one. m square v square r square by second equation को m v square by r is equal to, इसको square करने का right, n square h square by 4 pi square by इधर क्या होगा 1 by 4 pi epsilon naught z e square by r square. फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर किया, सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड किया. नाउ आपको रीअरेंज करके r वैल्यू फाइंड करो. r इक्वल हाउ मच? एक r कट m एक m कट v स्क्वायर कट और एक पाई भी रहेगा जेड स्क्वायर. रीअरेंज करके r इक्वल हाउ मच? सो रीअरेंज करके आए तो r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई pi m z square. Pi m z e square is a formula for radius of the nth shell. बड़ा फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है. n square h square epsilon by pi m z square. Okay. Now here everything you know, h value you know, epsilon naught value you know, pi value you know, mass of electron you know, atomic number, e is a charge of electron, everything you know. If I substitute the value, we'll get radius of the nth orbit. Formula is, shortcut formula is 0.529 into n square by z. We'll get in angstroms. So 0.529 into n square by z is a formula for radius of nth orbit. And you know, first r equal to 1 लगाए तो कितना होगा? r equal to 1 लगाए तो, n equal to 1 लगाए तो, for hydrogen atom I'm talking about. Hydrogen atom को z is 1, right? Atomic number is 1, n is 1,
फर्स्ट शेल आई एम टॉकिंग अबाउट 0.529, राइट? सो उसको क्या बोलते हैं, ए नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. 0.529 वी रिप्रेजेंट एज ए नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे 0.529 को. सो क्या होगा, एंड उसको बोर रेडियस बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को बोर रेडियस बोलते हैं. सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू, समटाइम्स आई कैन राइट ए नॉट टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर बाई जेड, राइट? बट आपको फॉर्मूला ये लर्न करना पड़ेगा. 0.529 into n square by z is the formula for this one, and this one also be important. n square h square epsilon by pi m z square. बैठ करो. इसके बाद ओनली वेलोसिटी, एनर्जी नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम हो जाएगा, और वन मोर क्लास में पूरा डन, चैप्टर डन.